important topic, very vast and very important topic in every individual's life. And being a teacher, मैं ये topic को बहुत closely समझ सकती हूँ, बहुत closely. And I have been teaching from last 11 years, and I know very well that what SEL means and what is the role of this in students and child's life. Because जो भी आप सीखते हैं बच्चों में, वही वो बड़े होके वो ग्रो करता है. ये चीज़ जो हम इनफैक्ट नॉर्मल जो हम अपने एज में भी अगर बोलते हैं कि हमें SEL की ज़रूरत है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी मच नीडेड इन द स्कूल लाइफ. बिकॉज वहीं से बच्चा ग्रो कर रहा है, वहीं से सीख रहा है. एंड पेरेंट्स बोलते हैं मैम आप जो बोलेंगे वही उनका, वो भगवान आपको मानते हैं, आपने जो बोल दिया वही सही है. दे डोंट लिसन टू अस. So I believe what is inculcated in the school life that goes throughout life. I believe. Now अब मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ, which you can relate and resonate very well. एक लड़की थी and she was a shy, not that confident, and she wanted to come out of that shell, but again कुछ चीज़ें ऐसी थी, प्रेशर इतना था कि उसको आने दिया नहीं जाता था. Like स्कूल के अंदर एक ग्रुप सेग्रीगेट किया जाता था, टॉपर्स का और एवरेज बच्चों का. एंड टीचर सिर्फ टॉपर्स को फोकस करती थी, एवरेज को बिल्कुल नहीं. एंड शी फेस्ड अ प्रॉब्लम थ्रू आउट द स्कूल लाइफ. शी वांटेड टू स्पीक, बोलने दिया नहीं जाता था. शी वांटेड टू राइट, अगेन शी वाज जज्ड, यू कैन नॉट राइट, बिकॉज उससे सुपीरियर जो थे दे वर गिवन द चांस. शी वांटेड टू सिंग, पार्टिसिपेट इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, अगेन सिंगिंग से भी बाहर, भाई और 5 हैं जो आपसे बेहतर हैं, they will only, and constant throughout the school they only participated and they only got prize, that girl never got chance. Gradually वो जो एक confidence था that got deteriorated. There was nobody whom she can speak to, no one. Even the friends started judging. एक छोटा सा जो ग्रुप उनका एवरेज बच्चों का था, वो आज भी वो फील करते हैं जो उस लड़की ने फील किया, क्योंकि उस पूरे ग्रुप को आगे बढ़ने दिया नहीं गया था. वो सेग्रीगेटेड ही रह गए थे. इंग्लिश में अगर वो फेल है तो अगेन शी वाज जज्ड, तुमसे कुछ नहीं हो सकता. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? ओनली द वर्ड प्रॉब्लम वाज देयर इन हर लाइफ थ्रू आउट. इवन पेरेंट्स कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हर प्रॉब्लम. Even friends could not understand what was her problem. Tuition teacher could not understand what was her problem. Why she is not getting marks? इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रही? Whether in English or maths. But again she came out of the school. She came to the college life. थोड़ा college life obviously school life से तो lenient ही होता है. She started making friends. She started bunking with friends and she started enjoying. And then gradually she started participating in school. She started participating in college. Singing में उसको best singer का award मिला. She started writing and she became an author as well. वो एक author भी बन चुकी है आज. And then जब एक और उसके life में she started moving and then she got married at a very early age again, thinking that maybe that zone is more comfort zone than this real life. Again उस life में भी उसको disaster ही मिला. The marriage did not succeed. And फिर वहाँ से वो 0 point पे आ गई. Then now what to do? She was balanced in the college life, but again now what to do? She kept on searching. She started, and there was a time where she healed herself. She became a certified Reiki healer. She became an author. She has sung 600 songs. She's a terrific dancer indeed because she won many prizes. So all that was her weaknesses that became the strength. And for your surprise, that girl was me. Okay?